हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लैप्सन टेक एजुकेशन। आज आम पॉलिटी मॉक टेस्ट 2 स्टार्ट करिवा। टोटल 100 क्वेश्चन रहिबा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन बी प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन सी पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑप्शन डी फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन बी व्हिच आर करेक्ट आंसर प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, when was the Constituent Assembly established to frame the Constitution of India? Option A 10th June 1946, option B 6th December 1946, option C 26th November 1949, option D 26th December 1949, option B which are correct answer 6th December 1946. Next question देखिबा, the number of article in Indian Constitution at the time of its adoption was? Option A 350, option B 360, option C 392, option D 395, option D which are correct answer 395. Next question देखिबा, when was the President's Succession Act enacted? Option A 1955, option B 1959, option C 1964, option D 1969, option D which are correct answer 1969. Next question देखिबा, in a parliamentary system, the executive is responsible to? Option A the legislature, option B the judiciary, option C the people, option D none of these. Option A which are correct answer the legislature. Next question देखिबा, who enjoys the right to impose responsible restriction on the fundamental rights? Option A the president, option B the supreme court, option C the parliament, option D the Lok Sabha, option C which are correct answer the parliament. Next question देखिबा, how many times the president has declared the financial emergency? Option A once, option B twice, option C thrice, option D never, option D which are correct answer never. Next question देखिबा, who decides the disputes regarding the election of the president? Option A the speaker, option B the supreme court, option C the election commission, option D the parliament, option B which are correct answer the supreme court. Next question देखंतु, how many seats are reserved for union territories in the Lok Sabha? Option A 10 seats, option B 15, option C 20, option D 30, option C which are correct answer 20 seats. Next question देखिबा, who legally competent to declare war? Option A the president, option B the prime minister, option C the Lok Sabha, option D the parliament, option A which are correct answer the president. Next question देखिबा, fundamental duties were introduced in the Indian Constitution by the? Option A 14th amendment, option B 42nd amendment, option C 43rd amendment, option D 44th amendment, option B which are correct answer 42nd amendment. Next question देखिबा, directive principle of state policy are directly concerned with? Option A fundamental rights, option B fundamental duties, option C Gandhian principle, option D preamble, option C which are correct answer Gandhian principle. Very important question मन रखिबे. Next question देखिबा, what is the maximum age prescribed for election as the president of India? Option A 58 years, option B 60 years, option C 62 years, option D no such limit, option D which are correct answer no such limit. Next question देखिबा, the president of India can declare emergency? Option A on his own, option B on the recommendation of council of ministers, option C on the recommendation of prime minister, option D on the recommendation of parliament, option D which are correct answer on the recommendation of the parliament. Next question देखिबा, the preamble to the Indian Constitution was amended by? Option A 24th amendment, option B 36th amendment, option C 42nd amendment, option D 44th amendment, option C which are correct answer 42nd amendment. Next question देखिबा, the monthly salary of the vice president of India as vice president is? Option A 20,000, option B 30,000, option C 35,000, option D nothing, option D which are correct answer nothing. Next question देखिबा, who has the right convenes the joint session of the two houses of parliament in India? Option A prime minister, option B president, option C vice president, option D none of them, option B which are correct answer the president. Next question देखिबा, the chief source of political powers in India is? Option A the people, option B the constitution, option C the parliament, option D the parliament and the state legislatures, option A which are correct answer the people. Next question देखिबा, the prime minister is the? Option A head of the state, option B head of the government, option C head of the state and head of the government, option D Calcutta High Court, option B which are correct answer head of the government. Next question देखिबा, under which High Court Andaman and Nicobar Islands come? Option A Madras High Court, option B Kerala High Court, option C Andhra Pradesh High Court, option D Calcutta High Court, option D which are correct answer Calcutta High Court. Next question देखिबा, which article accords special status to Jammu and Kashmir? Option A 356, option B 360, option C 372, option D 370, option D which are correct answer 370.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी डिफेंस मिनिस्टर, ऑप्शन डी चीफ मिनिस्टर। ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अनटचेबिलिटी कम्स अंडर व्हिच फंडामेंटल राइट्स in the Indian Constitution? Option A right to freedom, option B right to equality, option C right against exploitation, option D right to freedom of religion। option B होची यार करेक्ट आंसर right to equality। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा organization of village panchayat are in the corporated under which head of the Indian Constitution? option A fundamental rights, option B citizenship, option C directive principles of state, option D fundamental duties। option C होची यार करेक्ट आंसर directive principle of state। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा The Chief Justice of Supreme Court is appointed by option A the President, option B the Prime Minister, option C the Parliament, option D the Law Minister। option A होची यार करेक्ट आंसर the President। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Who will act as the President of India when the office of the both the President and Vice President are vacant? option A the Chief Election Commissioner, option B the Prime Minister, option C the Chief Justice of India, option D the Speaker of Lok Sabha। option C होची यार करेक्ट आंसर the Chief Justice of India। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु हैज द राइट कन्विंस द जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया? ऑप्शन ए द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी द वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर द प्रेसिडेंट। एटा रिपीट हिचे क्वेश्चन टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द प्लानिंग कमिशन वाज क्रिएटेड इन ऑप्शन ए 1950 एडी, ऑप्शन बी 1952 एडी, ऑप्शन सी 1953 एडी, ऑप्शन डी 1954 एडी। ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर 1950 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा The first citizen of India is the option A president, option B vice president, option C prime minister, option D speaker। option A होची यार करेक्ट आंसर president। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा consider the following statements। assertion the governor is appointed by the president of India and can hold office as per the latter's pleasure। तार रीजन देछि the term of the office of the governor is 6 years। option A both A and R are true and R is the correct explanation of A। option B both A and R are true but R is not correct explanation of A। option C A is true but R is false। option D A is false but R is true। option C होची यार करेक्ट आंसर A is true but R is false। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the emergency provisions of Indian Constitution were borrowed from option A Government of India Act 1935, option B Soviet Union, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ऑप्शन डी वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ऑप्शन डी होची यार करेक्ट आंसर वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आफ्टर ग्रेट लेबर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी ऑन ए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए 26 डिसेंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 30 नवंबर 1949। ऑप्शन सी होची यार करेक्ट आंसर 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन कॉल्ड ऑप्शन ए लॉयर्स पैराडाइज, ऑप्शन बी डिक्टेटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर लॉयर्स पैराडाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एट प्रेजेंट द राइट टू प्रॉपर्टी इज मियरली ए ऑप्शन ए लीगल राइट, ऑप्शन बी मोरल राइट, ऑप्शन सी नेचुरल राइट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर लीगल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज ऑप्शन ए 2 years, option B 4 years, option C 6 years, option D 5 years। ऑप्शन डी होची यार करेक्ट आंसर 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी सुप्रीम सभा, ऑप्शन सी असेंबली, ऑप्शन डी काउंसिल। ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द हाईएस्ट अपील कोर्ट इन ए स्टेट इज ऑप्शन ए सेशन कोर्ट, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ऑप्शन डी हाई कोर्ट। ऑप्शन डी होची यार करेक्ट आंसर हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Who was the permanent chairman of the Constituent Assembly? Option A Dr. Rajendra Prasad, option B Dr. Ambedkar, option C Pandit Jawaharlal Nehru, option D Mahatma Gandhi। ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल ऑप्शन ए 25 to 26, ऑप्शन बी 25 28, ऑप्शन सी 26 to 29, ऑप्शन डी 24 to 27। ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर 25 to 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन ए इक्वल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन टू स्टेट्स इन द राज्यसभा, ऑप्शन बी द सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रांग, ऑप्शन सी बोथ द सेंटर and the states can legislate on concurrent list, option D residuary powers are with the center। ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर इक्वल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन टू स्टेट्स इन राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
Indian upper house is known as option A the House of People, option B the Council of States, option C Parliament, option D none of these. Option B which is correct answer the Council of States, Rajya Sabha. Okay, next question देखिबा. The first civil service commission in India was set up on the basis of recommendation of option A Aitchison commission, option B Lee commission, option C Simon commission, option D planning commission. एटा आपण मान को पई होमवर्क. एटा आपण माने आंसर करबे कोन हबो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जणेबे तार आंसर कोन हबो. नेक्स्ट क्वेश्चन एटा आपण मान को SW. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग ऑफ द फाइनेंस कमीशन एवरी ऑप्शन ए ईयर, ऑप्शन बी थर्ड ईयर, ऑप्शन बी फिफ्थ ईयर, ऑप्शन डी सेवेंथ ईयर, ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर फिफ्थ ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑप्शन बी फर्स्ट पार्लियामेंट, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी ड्राफ्टिंग कमिटी. ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नॉर्मली द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट्स enumerated in option A the union list, option B the concurrent list, option C the state list, option D the union as well as concurrent list. Option D which is correct answer the union as well as concurrent list. Next question देखिबा. The constitution of India vests the executive authority of the union in the option A president, option B council of ministers, option C president and parliament, option D prime minister. Option A which is correct answer president. Next question देखिबा. According to the constitution of upper house of the state legislative can be created or abolished by option A state legislative assembly, option B the parliament of India, option C the governor of the state, option D presidential order. Option B which is correct answer the parliament of India. Next question देखिबा. Which state legislative assembly has the maximum strength? Option A Andhra Pradesh, option B West Bengal, option C Uttar Pradesh, option D Maharashtra, option C which is correct answer Uttar Pradesh. Next question देखिबा. Which one of the following categories of the members are not included in the state in the legislative council? Option A members elected by municipalities, district boards and other authorities in the state, option B representatives of temple and churches and mosques, option C representative of person engaged in teaching in institution, not lawyer in standard than secondary school, option D members nominated by the governor from amongst person having special knowledge of literature, science, arts, cooperative movement and social service. Option B which is correct answer representatives of temples, churches and mosques. Next question देखिबा. Which is the largest committee of the Indian Parliament? Option A the Public Account Committee, option B the Estimates Committee, option C the Committee on Petitions, option D the Rules Committee. Option B which is correct answer the Estimates Committee. Next question देखिबा. The President of India is option A appointed by the Prime Minister, option B elected by the Prime Minister, option C elected by the Chief Minister of the state, option C elected by the Electoral College consisting of members of Parliament and state legislatives. Option D which is correct answer elected by the Electoral College consisting of members of Parliament and state legislative. Next question देखिबा. The oath of the office of the President in conducted by option A Chief Justice of India, option B the Prime Minister of India, option C the Vice President of India, option D none of them. Option A which is correct answer the Chief Justice of India. Next question देखिबा. The President can vacate his office by addressing his resignation to option A the Vice President, option B the Speaker of Lok Sabha, option C the Prime Minister, option D the Chief Justice of India. Option A which is correct answer the Vice President. Next question देखिबा. The Vice President who assumes of office of the President in case of vacancy hold the same for option A the unexpired term, option B a maximum period of 1 year, option C a maximum period of 6 months, option D a maximum period of 3 months, option C which is correct answer a maximum period of 6 months. Next question देखिबा. The President of India enjoys the right to veto. Option A both money bills and non-money bills, option C only money bills, option C only non-money bills, option D none of the two types of bills, option C which is correct answer only non-money bills. Next question देखिबा. The proclamation of emergency must be placed before the Parliament for its approval. Option A within 1 month, option B within 2 months, option C within 6 months, option D within 1 year. Option A which is correct answer option A within 1 month. Next question देखिबा. The Vice President of India elected by option A the legislative assemblies of the state, option B the same electoral college which elects the president, option C the members of Rajya Sabha, option D
द मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ऑप्शन डी होची यार करेक्ट आंसर द मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन रियलिटी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेज इन ऑफिस एज लॉन्ग एज इट एंजॉयज। ऑप्शन ए द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। ऑप्शन बी द कॉन्फिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन सी द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑप्शन डी द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्पीकर। ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज कंडक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू द। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। ऑप्शन सी चीफ मिनिस्टर। ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट। एक्चुअली तार आंसर डाउट टिके अछि आपण माने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जानिबे एक्चुअली तार आंसर कोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी आस्क्ड टू टेंडर हिज रेजिग्नेशन if he loses the confidence of option A the governor, option B the state legislature, option C the chief minister, option D the high court। option B होची यार करेक्ट आंसर the state legislature। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the chief justice of supreme court is appointed option A by the president alone, option B by the prime minister alone, option C by the president in consultation with the judges and the supreme court and high courts, option D the chief justice of all high courts। option C होची यार करेक्ट आंसर by the president in consultation with the judges and the supreme court and high courts। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the president can seek advice of the supreme court, option A with regard to appointment of the supreme court, option B for enactment of laws on subjects enumerated in the state list, option C regarding constitutionality or otherwise of a law under enactment, option D on all these matters। option C होची यार करेक्ट आंसर regarding constitutionality or otherwise a law under enactment। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the supreme court has been given advisory powers under option A article 243, option B article 43, option C article 142, option D article 143। option D होची यार करेक्ट आंसर article 143। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which one of the following is wrongly matched। option A planning commission, formulation of plans, option B election commission, conduct of election, option C public service commission, selection of government servants, option D finance commission, preparation of budgets। option D होची यार करेक्ट आंसर फाइनेंस कमिशन प्रिपरेशन ऑफ बजेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा who is the chairman of the planning commission of India। option A finance minister, option B prime minister, option C planning minister, option D human resources development minister। option B होची यार करेक्ट आंसर द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the first vice president of India was option A Zakir Hussain, option B Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, option C V.V. Giri, option D G.S. Pathak। option B होची यार करेक्ट आंसर Dr. Sarvapalli Radhakrishnan। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा our Indian constitution gives us how many fundamental rights। option A 6, option B 7, option C 9, option D 10। option A होची यार करेक्ट आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा for how many terms one can be president of India। option A 1 term, option B 2 term, option C 4 term, option D no limit। option D होची यार करेक्ट आंसर no limit। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा our constitution came into force on very important question। option A 26 November 1949, option B 15th August 1945, option C 26 January 1950, option D 15th August 1947। option C होची यार करेक्ट आंसर 26 January 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज टू ऑप्शन ए एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ऑप्शन बी प्रमोट ए सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, ऑप्शन सी एंश्योर इंडिविजुअल लिबर्टी, ऑप्शन डी एंश्योर ऑल दिस। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर एंश्योर ऑल दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमिशन ऑफ इंडिया वाज। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी कृष्णामाचारी। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर कृष्णामाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ऑप्शन ए ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी मीडियम साइज कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी बल्केस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी वेरी ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर बल्केस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट द लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर द प्रेसिडेंट द लोकसभा एंड राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर्स, ऑप्शन ए एवरी इयर्स, ऑप्शन बी एवरी 2 years, ऑप्शन सी एवरी 3 years, ऑप्शन डी एवरी 4 years। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर एवरी 2 years। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
Which one of the following rights is vital for the successful working democracy? Option A right to property, option B right to association, option C right to assemble, option D right to criticize. Option D होची यार correct answer right to criticize. Next question देखिबा which amendment of the constitution added the words socialist secular to the preamble? Option A 26th amendment, option B 44th amendment, option C 42nd amendment, option D 40 amendment. ऑप्शन सी होची यार करेक्ट आंसर 42nd अमेंडमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑप्शन ए सान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी ए बैक बराइंग्स, ऑप्शन सी नॉट ए कॉपी ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर ए बैक बराइंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप इन ऑप्शन ए इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1950. ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर 1946. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन द पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन ए द मिनिस्टर्स हैव बी फिक्स्ड टेन्योर, ऑप्शन बी द मिनिस्टर कैनॉट बी रिमूव्ड बाय वीटो ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ऑप्शन सी द मिनिस्टर्स कैन बी रिमूव्ड बाय द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ऑप्शन डी द मिनिस्टर्स आर आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट ओनली. ऑप्शन सी होची यार करेक्ट आंसर द मिनिस्टर्स कैन बी रिमूव्ड बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा in Indian parliamentary government option A the minister are not the members of the parliament, option B the minister are the members of the Lok Sabha only, option C the minister are the members of the parliament, option D the ministers are the members of the Rajya Sabha only. ऑप्शन सी होची यार करेक्ट आंसर द मिनिस्टर आर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द परमानेंट सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज दैट ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कानपुर, ऑप्शन सी होची यार करेक्ट आंसर दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम द ऑप्शन ए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी रूसियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी स्विस कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा who was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? Option A Dr. Ambedkar, option B Dr. Rajendra Prasad, option C Sardar Patel, option D Pandit Jawaharlal Nehru. Option A होची यार करेक्ट आंसर डॉक्टर आंबेडकर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द नॉर्मल टर्म ऑफ गवर्नर्स ऑफिस इज ऑप्शन ए 3 years, ऑप्शन बी 5 years, ऑप्शन सी 6 years, ऑप्शन डी 4 years, ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर 5 years. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the system of dual citizenship exists in option A USA, option B France, option C India, option D UK. option A होची यार करेक्ट आंसर USA. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the judges of the Supreme Court are appointed for the term of option A 5 years, option B 5 years or until they attain the age of 60, option C 6 years, option D 6 years or until they attain the age of 65. option D होची यार करेक्ट आंसर 6 years or until they attain the age of 65. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Abraham Lincoln is known for option A land reforms, option B external policies, option C abolition of slavery, option D independence movement. option C होची यार करेक्ट आंसर abolition of slavery. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which one is called as mini constitution? option A 42nd, option B 43rd, option C 52nd, option D 39th. option A होची यार करेक्ट आंसर 42nd. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. The Union Public Service Commission submits an annual report of its work to option A the President, option B the Cabinet Secretariat, option C the Home Minister, option D the Parliament. option A होची यार करेक्ट आंसर the President. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा in India the President enjoys option A all the power, option B only nominal powers, option C less power, option D more powers than the Prime Minister. option B होची यार करेक्ट आंसर only nominal powers. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द मैक्सिमम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए 58 years, ऑप्शन बी 62 years, ऑप्शन सी 60 years, ऑप्शन डी नो सच लिमिट. ऑप्शन डी होची यार करेक्ट आंसर नो सच लिमिट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी द वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी द स्पीकर ऑफ लोकसभा. ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर द वाइस प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the vice president of India is option A appointed by the president, option B elected by the people, option C elected by the members of the both houses of the parliament, option D elected by state legislature. option C होची यार करेक्ट आंसर elected by the members of the both houses of the parliament. next question देखिबा the president of India must have completed the age of option A 25 years, option B 35 years, option C 30 years, option D 58 years. option B होची यार करेक्ट आंसर 35 years. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
मैच द करेक्ट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विथ द कंट्री फ्रॉम व्हिच दे हैव बीन बोरोड। ऑप्शन ए रूल ऑफ लॉ यूएसए, ऑप्शन बी जुडिशियल रिव्यू ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी आइडियल ऑफ कनकरेंट सब्जेक्ट इंग्लैंड, ऑप्शन डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड। ऑप्शन डी हूँ यार करेक्ट आंसर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर बीइंग द प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए 60 इयर्स, ऑप्शन बी 65 इयर्स, ऑप्शन सी 70 इयर्स, ऑप्शन डी नो एज लिमिट। ऑप्शन डी हूँ यार करेक्ट आंसर नो एज लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा इज इन। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। ऑप्शन सी हूँ यार करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु इज लीगली कॉम्पिटेंट टू डिक्लेयर वार। ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी द पार्लियामेंट, ऑप्शन डी द लोकसभा। ऑप्शन ए हूँ यार करेक्ट आंसर द प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन भी रिपीट होइछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस। ऑप्शन ए ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी फॉर द टर्म ऑफ 5 years, ऑप्शन सी फॉर ए टर्म ऑफ 4 years, ऑप्शन डी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी हूँ यार करेक्ट आंसर फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल। ऑप्शन ए द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी द पीपल, ऑप्शन डी द पार्लियामेंट। ऑप्शन डी हूँ यार करेक्ट आंसर द पार्लियामेंट। ताले आज सेटी एट एंड करबा। जदि आपण मानकु वीडियोटी भल लागुथाय प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।